Before you guys start passing judgment on me, I want to say that I am an aspiring YouTuber and I have been making YouTube videos on and off from past few years. और इतना कुछ सक्सेस मेरे को मिला नहीं है अभी इसमें. But I know that there are a lot of people and like majority of people who are creators are aspiring creators who are yet to get success. So this is the video for the people who decided to join or who are already in this YouTube content creator circus and want to go far, want to develop themselves in that. So get ready for a wild ride of awkward stares comment from the people, mostly the bad comments, and occasional cat videos which will steal your thunder. This is Geet and welcome to the channel. So a few years back when I started my channel, I was a small YouTuber as I am right now, and I was too much shy in front of the camera. Whenever I go to some places and I see people around me, मेरे को लगता था कि यार इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा. They are staring at me, मेरे को जज करेंगे. The people who I don't even know, I was so much feared of their judgment. On the other hand, जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ and I look at the camera and start speaking with the camera, मुझे लगता था यार थोड़ी weird सी feeling आ रही है कि कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ. There is not a real person in front of me. So how to overcome that? कैसे इसका सामना करूँ मैं? The only way to overcome it is repetition. Repetition builds confidence. कितना भी weird लगे, कितने भी लोग हो सामने, just keep on making videos और कुछ भी जो भी मन में आए बोलते रहो कैमरे के सामने. This will give you a muscle memory to how to talk in front of the camera और बहुत टाइम तक आप ये करते रहोगे. If you keep on repeating the same thing over and over again for a few months or a couple of years, आपके अंदर वो confidence आ जाएगा कि now I am confident to speak in front of the camera and talk with it just like I'm talking with my best friend. Kind of. You know, this thing is almost same as going to the gym. आप जिम में जाते हो and on the very first day if you try to lift very heavy weights, बड़े 10-10 kg के bumper plates लगा के ऐसे biceps मारने लगो, then you will not able to do it. And even if you are able to do it, pain, soreness बहुत कुछ हो सकता है, injuries भी हो सकती है, right? So what you do is start small और रिपीटेटिवली वो चीज़ करते ही रहो. Then eventually you will be able to lift heavy. The same scene is there with YouTube also. Start करो, आप कुछ भी टाइप की वीडियो बनाते रहो, एडिट करो, पोस्ट करो. Don't care about people's judgment. And if you keep on doing this for a certain period of time, you will get better at it. Trust me. The next one is embracing the public judgment and pushing yourself through it. पिछले कुछ सालों से मैं ट्रैवल वीडियोस बना रहा हूँ एंड उससे पहले मैं टेक वीडियोस बनाता था. आई वाज सो मच कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजीज बिकॉज मैं इंजीनियर हूँ. आई एम एन इंजीनियर एंड आई हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी गुड कंपनीज एंड आई हैव वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज. बट उसके बाद मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया एंड आई वाज सो मच फैसिनेटेड with traveling videos, with documenting all my travels कि कहाँ गया, मैंने क्या क्या किया वहाँ पे. But there is a biggest hurdle when you make travel videos. आपको पब्लिक के बीच में अपना कैमरा लेके उससे बात करनी पड़ती है. Initially, I was so much hesitant to talking with my camera. जहाँ भी जाता था, I would see people looking at me, staring at me और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग क्यों मुझे देख रहे हैं. The people that I don't even know and I was so much afraid of them staring at me. वो बहुत ही बेकार चीज़ है, right? But what I really needed to do was to embrace public staring, to embrace public judgment and push through it, right? The more you push, the more you get this ability called IDGAF. So बनाते रहिए आपकी videos and keep pushing through public judgment, especially if you are making videos in public. Make sure that you do not bother them और उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना दें आप. As long as you do that, you are allowed to do anything that you want. On the number 3, the next one is self-motivation. Just like anything else, YouTube में भी you'll need a lot of self-motivation. आपको रोज़ अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि भाई नहीं आज मुझे वीडियो बनाना है, आज तो वीडियो बना के ही रहूँगा. And you'll not get so much motivated when you have very less number of subscribers. अभी भी मेरे इतने subscribers नहीं हैं. And every now and then I give up on making videos because my channel doesn't have so many views or so many subscribers.
तो हर सुबह ऐसे उठ के बोलना है कि आई एम ऑसम एट मेकिंग द वीडियोस एंड एक दिन मैं मस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना दूंगा एंड probably that will become truth someday, right? Who knows? The number 4, it is faith plus work. Faith plus work equals to success. Faith without work is a waste of time. Work without faith is a waste of time. Okay. तो आपने सोच ही लिया है कि अब मैं YouTube में आगे बढ़ूंगा एंड I'll make videos maybe for fun or for a professional thing. Then you have to have faith in you कि भाई मैं कर लूँगा कैसे भी करके, बिकॉज दिस फील्ड इज सो मच अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी वायरल हो जाता है एंड यू टू एम्ब्रेस दैट एंड हैव फेथ कि मैं करता रहूँगा इवन इफ पीपल आर नॉट वॉचिंग इट, आई विल कीप ऑन डूइंग द थिंग बिकॉज आई लव इट. ऑन द अदर हैंड वर्क विदाउट फेथ इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप काम ही करते रहो एंड आप फालतू से वीडियो बनाते रहो कि जो आपको खुद को पसंद ना हो. See, you do it for fun, right? You do it because you love it. And if you try to look at the statistics that, okay, इस टाइप बैंकिंग फाइनेंशियल वीडियोस में बहुत सारे व्यूज आते हैं and you don't even know anything about finance or politics or any other niche जिसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं and you jump on it and start making videos and then you see that आपको खुद को मज़ा नहीं आ रहा है, you are not able to focus, you are not able to speak anything about it, तो वो भी खराब है. So make sure that you have faith on what you work on and you work on what you have faith on. These both things go hand in hand. On the number 5 and the most important thing in YouTube is adaptation. रोज कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है और रोज अलग ही तरह के वीडियो लोग देखते रहते हैं और आजकल कुछ भी वायरल हो सकता है. So you have to adapt to what's happening, to what's trending around. If you are in tech field, आप tech videos बना रहे हो, then you have to know that कौन सी technology सबसे ज़्यादा अभी trending में है. Like AI nowadays, AI agents, those things are very trending nowadays. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में एंड इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट. आप AI से खुद से पूछ सकते हो या फिर यू कैन सी इट ऑन योर यूट्यूब फीड कि कौन कौन सी चीज़ें आजकल फेमस है एंड यू कैन पिक द टॉपिक, राइट अ स्क्रिप्ट and make a video around it. It's as easy as that. So that's all about today, guys. आज के लिए इतना ही ज्ञान था मेरे पास जो मैं आपको दे सकता हूँ. So yes, if you are a new YouTuber, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप अनकम्फर्टेबल होंगे, like the camera consciousness, like people around you, demotivation because of not having good views. But just have this thing in your mind that whatever it is, I'll keep on making videos and I'll keep on documenting what I love. I'm doing it for myself and not for the people around me. So with that Josh, start making your next video. You'll only need your phone to make your next video. And with that, it's time to say goodbye. Like it if you like this video, give your suggestions in the comment box, subscribe, and I'll see you the next time. Till then, stay safe and make more videos.